Hi everyone, this is Sagar and today I'm going to teach you how can you use future continuous. Okay, so in future continuous we have subject, will, be, first form of verb, ing and object. So guys, subject means name, he, okay, you, I, like this. Then after you will add will be. You might be thinking, what is will? Will is basically a modal verb. Modal verb is never used alone. So that's why we are adding here be. Now what is be? This is also a form of is, am, are. So we cannot use will, is, am, are. That's why we are using here be. After this we have first form of verb like go, use, then you can add ing. After this there is object. Now why and how I can use future continuous. Guys, जब भी आपने future continuous यूज़ करना है, you need to know कि आप एक ऐसी situation की बात कर रहे हो future में जब आप कोई चीज़ continue कर रहे होगे. For example, I go to gym at 8. So वो मेरा टाइम है जब मैं जिम जाता हूँ. जैसे आज मैंने जिम जाना है, I will go to gym at 8. So till 10 मैं जिम में हूँगा. तो उसके बीच में जो चीज़ें continue में रहेंगी उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. जैसे at 8:30 I will be lifting weight. और अगर मुझे कोई फ़ोन करके पूछ रहा है सागर तू कल 11 बजे फ्री है, तो मैं उसे कहूँगा नो, at 11 AM I will be teaching, right? So now either I can add here I will be teaching English. Now this time my class doesn't start. My class will start tomorrow at 10. So at 2 the class will get over, but at 11 okay, मैं ये चीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे मेरी टीचिंग जो मेरी क्लास है ख़त्म हो जाएगी या स्टार्ट होगी. उस टाइम पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो इट मीन्स वो कंटिन्यूस में होगा एक्शन. दैट्स वाई आई कैन यूज़ एट 11 AM आई विल बी टीचिंग इंग्लिश. अगर आपको पता है कि इस टाइम पे मैं फ्यूचर में कंटिन्यू कुछ कर रहा हूँ तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो future continuous. Thank you so much for watching this video. I hope you understood how can you use future continuous after watching this video. Kindly subscribe my channel to watch some new interesting videos on other topics.